Okay. Now let us see the next command from the draw toolbar on the same object. Here, that is about dimensions. Today we are going to observing how to show the dimensions and how to do changes in that dimensions. Okay, so see here in annotation toolbar we can observe the different dimension commands are there. So simple dimension command is also there, which creates the multiple types of dimensions within a single line, a single command session. Okay, means whatever the types we learn in dimension uh, in engineering graphics subject, those types we can observe here. Okay, dimension, linear dimension, inline dimension, such a types also we can observe here. Okay, so apart from this, here also again options in annotation toolbar, that is we have to show linear dimensions. Linear dimensions here means a straight line dimensions. Here we can observe the symbol of this command, which indicates the two extension lines and one dimension line ends with arrows, which is exactly horizontal. Means this command we can use for showing exactly straight vertical or horizontal distance between endpoints of a line. Okay, and the next is about a line. Whenever there is an inclined line in the drawing and of which we want to show its true length, in that case, instead of linear, we can use the align command or align option of the dimension. Then angular, whenever we want to show the angle, in that case, we are using the angular command. Then whenever there is an arc and we need to know what dimensions or what length it has, in that case, we can also check we using this arc length command. Radius, we know when we know the radius of the arc and uh, we know the center of that arc or the arc between two elements. In that case, we can use this command to give the radius to the sharp corners like here. Okay. Then diameter, whenever we want to show the diameter, see this radius command we can apply or use for showing arc radius or circle radius, complete circle radius. Similarly, the next command, that is diameter, we can use to show the complete diameter of circle or segment of circle or semicircle diameter. For showing its diameter, we can use this diameter option. Okay. Now let us see first of all whatever I discussed. So this linear command I selected by clicking on it. ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया linear पे, ये ऑप्शन मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया. Now select the 2 points which we want to between which we want to show the dimension. ठीक है, तो यहाँ पे I want to show this horizontal length. So here I pick the left side first point and right side end point of the line, horizontal baseline. Okay. Now here the dimension line appears with dimension text. So see here, whenever we are zooming it, we can observe this dimension text along with extension line and dimension line, right? But now it's not visible. For making it visible, select this
Right click once in blank screen, then select the second, whatever the dialog box pop up on the screen. Select the second line, second last option, properties from that. See the properties toolbar will appear. See here at left side, properties toolbar appear, which indicates all the properties of the selected entity. So here selected entity क्या है? Dimension है. ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी सारे हमें यहाँ पे दिखाई देंगे. ठीक है, so for making it visible, what we have to do, don't go in general options. Okay, we don't need those options, general and miscellaneous. Now we want to show or make a visible of arrowhead. So lines and in lines and arrows option, the arrow type must be close field. ये हमने ग्राफिक्स में भी स्टडी किया है, राइट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टडी किया है. The same options are here and same standard we are using here. So the third option is about arrow size. So here by default size is 0.18. First of all, increase that size. See, while learning the engineering drawing, what we learn, we have to keep the arrow size in the proportion of 3:1. The same proportion here we are getting. Only here we have to set the arrow size. And that size should be in between 3 to 5 mm. So I am just entering 3, putting 3 and pressing the enter key. Here you can observe the arrow size increased, right? Then forget about other things. Now here, the next important thing about this lines and arrows options, the last option, that is extension line of offset. Okay, extension line offset जो है, see here अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, right? Extension line, we know this last line, right, of the dimension line. So extension line offset indicates the start point of the extension line and the object. Okay, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, that is indicated here as extension line offset. ठीक है, तो ये हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता हुआ नहीं चाहिए. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे. We are setting this to 3 mm. See 3 mm and enter key. Now here you can observe the extension line gets shifted by 3 mm from the main object. Right. In this way we need this. Right. Now arrowheads are visible. Extension line offset we have given here. Now but the dimension text is not visible. So go in dimension text properties. Here the fourth option is about text height. So this we have to increase. The same size here we can observe, that is 0.18, that we have to increase. So here
we have to increase the text height as per standard. As per standard हमने क्या सीखा है, ये 4 mm चाहिए, राइट, फॉर नॉर्मल टेक्स्ट। और हेडिंग के लिए हम कितना रखते हैं इसका साइज, up to 6 or 8 mm, or sometimes we may use the 10 mm height also for the text. Okay, so here after pressing enter key, तो कीबोर्ड मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 एंटर किया सिलेक्ट करके, 4 टाइप किया और एंटर की प्रेस की once. Here the text height by default increased. Now the next important point about this, that is about precision points. Precision points कितने हैं यहाँ पे, up to 4 decimal places text दिख रहा है हमें. If we don't want up to 4 decimal places, here if we need only up to 1 or 2 decimal places, in that case, now the next option is about this precision. That option we can find here in primary units. The last option of this primary units is about precision. So from here we can set the up to what decimal places we want to display this dimension text. Okay, मतलब यहाँ पे हमें 0.0 तक चाहिए, 0.00 तक चाहिए, वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं by selecting this precision option. ठीक है, now it's okay. Now this is visible to us and everything is okay. So simply once click on this blank screen and press escape key to exit the properties toolbar. Properties toolbar में से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, escape की प्रेस करनी है एक बार. फिर इसके बाद now the next is, सिर्फ हमने बेस का डायमेंशन दिखाया, अभी वर्टिकल डायमेंशन भी दिखाना है. सो टेक द सेम so here we are going to selecting the same command, that is linear and showing the vertical dimension. This is indicates this much of height. Again press enter key to get the same command or activate the same command. Now I want to show this total height and subtraction of this height. From this height, this one we get the this remaining height. So no need to show again the same dimension. तो यहाँ पे रिपीटेशन भी नहीं करना है हमें. ठीक है, अभी डायमेंशन तो हमने प्लेस किया, बट दिस ऑल्सो नॉट विजिबल, राइट, लाइक प्रीवियस वन. नाउ what we are doing here, we are here using the command match properties. Match properties, select that command. ये इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है. Then see the command prompt area. It tells us select the source object. मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसकी तरह हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज चाहिए. ठीक है, तो सोर्स ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस प्रीवियस 100 mm डायमेंशंस जिसके हमने प्रॉपर्टीज सेट किए हैं. क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो हमें चेंज करने हैं. उस पे क्लिक करना है. ठीक है, नाउ सी, right click once and press enter option to terminate the command. Now it's visible to us, right? Now here similarly I want to show the diameter of the circle. So select the diameter option from this
and click on the circle. Okay, here, and place this text outside the view. Now the same way this one is also not visible. So for making it visible, see, first of all, again we are going to using the match properties. Before that, I just going to show all the remaining dimensions. So this dimension also I need to show, and placement of this dimension is above this view. Now about this square, we don't we have not shown here the dimension of this square, that we have to show in the front view. Similarly, we have to show its center line distance, right? Center line distance of the vertically down in side view. Now it is placed. Okay. Now want to now see using both the views here, we observed, or we are getting here all the dimensions of this object, right? So for getting it clear, simply select the match properties, select the source object, and select the destination objects in one line. Right now, all the dimensions are visible here. Then press right click and enter, or you may escape the command. Use the escape option after selecting. Okay, यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? एक्सप्लेन करूंगी. तो यहाँ तक हमने देखा. देखो, हमने प्रॉपर्टीज टूल बार हटाया नहीं है लेफ्ट साइड का. क्यों? बिकॉज वी वांट टू शो this object having this exactly a square hole, but by showing only 25 dimension, it is not mentioning that here it's a square hole, right? Like the circle here, phi symbol indicates it's the diameter. Similarly, for mentioning the square, we already learned in how to represent it in engineering drawing. Same way we have to represent on the drawing also. Okay, so as a design engineer, we must know or aware about those things. Don't show simply or blindly a 25 dimension of this square. Okay, so in one dimension, we have to mention it's a square hole. So how it is possible? So select that dimension. Here we can observe the dimension properties, in which the text option, see, in text option, there's last option, that is text override, right? तो text override पे उसके सामने वाले बॉक्स में हमें क्लिक करना है. यहाँ पे थ्रू कीबोर्ड हम टाइप करेंगे SQ25.00 and press the enter key. Now see here you can observe the text changes in text dimension. Text appears which we selected. ठीक है, बट हमेशा ध्यान में रखना है जो हमने सेटिंग की है ऑब्जेक्ट स्नैप के,
ये देखने हैं पहले बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद हमारा ड्राइंग हमेशा परफेक्ट आना चाहिए। ओके, ये टेक्स्ट ओवरराइड का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जहां पे हमें एज पर स्टैंडर्ड डायमेंशन शो करने हैं वहीं पे यूज करेंगे। राइट नाउ देयर इज नो नीड टू शो square dimension inside view also. By default, in front view, we can get it's a square hole. Right? समझ में आ रहा है? So, ये repeat नहीं करना है. Okay. Now I'm closing this properties toolbar. So here we can observe two views are enough to define any component. ये हमने already learn किया है while studying the engineering drawing. तो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी. सो आई एम नॉट गोइंग फॉर द नेक्स्ट व्यू और टॉप व्यू ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. ओके, बिकॉज इसमें सारे कमांड्स कवर नहीं हो रहे. ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट ड्रॉ टूलबार की कमांड एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, हम इसके सारे कमांड्स देखते हैं अलोंग विद द सेम ड्रॉइंग. ठीक है, जो मैंने शेयर किया था ड्रॉइंग, ये तो उसके दो व्यूज कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट व्यू आप कर सकते हो बाय टेकिंग इट्स प्रोजेक्शंस इन टॉप व्यू. Okay, let me finish this also. Select the line command, take projections, keep ortho mode on, take its projections below the reference line, give here the dimension 100, press enter key once, then vertically down means its width we have already taken here, that is 60, right? So type here 60, give the length 60, again horizontal 100, right? 100, enter, then vertically up again 60 and enter, again enter to terminate the command. मतलब enter जहां पे मैं बोलती हूँ ना वहां पे मैं enter की प्रेस करती हूँ ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड का मैं एंटर की प्रेस करती हूँ, रिमेम्बर. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट द सेंटर लाइन ऑफ दिस. तो जहां पे सेंटर पॉइंट हाईलाइट होगा, मिड पॉइंट वर्टिकल लाइन का हाईलाइट होगा, वहां से हमें सेंटर लाइन मिलेगी, रिमेम्बर. ठीक है, ये हुआ सेंटर लाइन, राइट. अभी इसके बाद हमें क्या चाहिए? प्रोजेक्शंस फ्रॉम फ्रंट व्यू एज वेल एज फ्रॉम साइड व्यू. सिंपली हम डायरेक्टली प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से. सी हियर वी वांट हियर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट. ये परपेंडिकुलर आया नहीं. ठीक है, नाउ press the enter key. This line not necessary, delete it or erase it. Now see here, zoom this. Here we can observe the line started from this point, but after selecting we can find here a small segment is there which is not needed, so erase it. Now it's a clear single line only. ठीक है, अभी नेक्स्ट है स्क्वायर होल के हमें प्रोजेक्शंस लेने हैं. जो थ्रू है लाइन कमांड, स्क्वायर होल के प्रोजेक्शंस. जो थ्रू आउट है तो परपेंडिकुलर पॉइंट पिक करने हैं हमें टॉप व्यू दिखाते वक्त, राइट. एंटर, एंटर, अगेन टेक प्रोजेक्शंस फ्रॉम फ्रंट व्यू. यहाँ से यहाँ पर एंटर, एंटर, एस्केप. ना ये हुआ स्क्वायर होल का.
बट ये क्या है, विजिबल है क्या टॉप व्यू में? नहीं, ये अननेसेसरी लाइन्स है, प्रोजेक्शन लाइन्स, तो इरेज दोज लाइन्स। ओके, नाउ ये वाला क्या है, हिडन है, बट यहाँ पे अभी हमने कैसे दिखाया है, कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया है। उसके प्रॉपर्टी चेंज करेंगे बाय प्रॉपर्टीज टूल बार, which is including the colors also. Okay, from there we are going to changing its properties. Now about the circle having the diameter 30 means 15 mm पे हमें क्या करना है, इसको ऑफसेट चाहिए। सो मॉडिफाई टूल बार में ऑफसेट कमांड है, सिलेक्ट दैट कमांड बाय क्लिकिंग ऑन इट। सी द कमांड प्रॉम्प्ट एरिया, कमांड प्रॉम्प्ट एरिया पे ये बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा हमें चाहिए 15 mm। तो टाइप थ्रू कीबोर्ड एंड प्रेस एंटर की वंस, सेंटर लाइन के ऊपर और सेंटर लाइन के नीचे के डायरेक्शन में क्लिक करना है हमें। सेंटर लाइन पे क्लिक करके ऊपर की डायरेक्शन में एक बार क्लिक करना है और फिर से अगेन सेंटर लाइन पे क्लिक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें क्लिक करना है, सो दैट वी कैन गेट द lines having a difference 30 mm। ठीक है, नाउ ट्रिम कमांड from modify toolbar, trim up to this line and this line, select the objects। ये दो लाइन तक हमें अभी जो हमने ऑफसेट करके लिए हुए लाइन से वो चाहिए, तो ट्रिम कमांड सेलेक्ट करेंगे। वर्टिकल दो लाइन्स हमने सेलेक्ट किए, राइट क्लिक वंस थ्रू माउस एंड सेलेक्ट द unwanted entities और click on the unwanted portion of the entity, जो हमें नहीं चाहिए उस पे क्लिक करना है। To terminate the command, press the simply escape key। ओके, नाउ यहाँ पर भी हमने हिडन लाइन नहीं दिखाया है, राइट? सो सिलेक्ट सिंगल एंटिटी एंड गो इन दिस प्रॉपर्टीज टूल बार। यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन टाइप लेंगे -2। अगर यहाँ पे अभी हम देखेंगे, साइड पे एक बार क्लिक करो और फिर एस्केप की प्रेस करो। यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो ये चेंज हुआ है, हिडन लाइन कन्वर्ट हुआ है, डैश लाइन कन्वर्ट हुआ है, बट विजिबल नहीं है। सो सेम वे हियर वी हैव टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी। So here by selecting the entity, right click once and select the properties toolbar. Now from this properties toolbar, change the line type scale from the general option। Okay, general option में जो line type scale है वो हम increase करेंगे 5 and enter key and then press escape key। See if it is visible then it's okay, but whenever I'm just zooming it out, it's not visible to me. So again I am selecting this and increasing this line type scale to the 15 and pressing the enter key and escape key। Okay, now it's visible and it's okay for me। So match properties, this line, like this line we want, now both those lines, this vertical line and this horizontal line, right click once, enter, again properties command, center line select as a source object, then top view center line we have to convert। Okay, in this way this top view is completed। Now the next important thing which I want to tell you, that is about the text
command which is present in annotation toolbar. Okay, if now I want to give the labeling to this views. In that case, I'm going to using the text command. तो अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट देखेंगे क्लिक करके, तो इसमें भी दो ऑप्शंस है, मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट. मल्टी लाइन टेक्स्ट जनरली यूज होता है कहाँ पे, जहां पे अगर हमें एक सेंटेंस से ज्यादा, अगर हमें कुछ टाइप करना है, लिखना है उस ड्राइंग में, उस केस में हम मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करते हैं. एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट में सिंगल लाइन टेक्स्ट रहता है. सपोज मुझे सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है, उस केस में सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया तो भी चलेगा. बट हियर आई एम यूजिंग द मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड. So simply click on it, then specify the first corner point. See here, command prompt area. The software tells us specify the first corner. इस केस में हमेशा ध्यान में रखना है, लेफ्ट साइड, लोअर लेफ्ट साइड कॉर्नर पॉइंट हमें पहले सेलेक्ट करना है. उसके बाद अपर राइट साइड कॉर्नर पे हमें जो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स विजिबल होगा, तो उसका अपर राइट साइड कॉर्नर पॉइंट हमें देख के सिर्फ क्लिक करना है. See here, now we entered in dimension text command. Okay, अभी अगर हम देखेंगे तो इसका जो हाइट है, तो ये जो हम देखेंगे ऊपर कहाँ पे, जहाँ पे मेन्यू बार है उसके नीचे जस्ट, तो यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस चेंज हुए दिखाई देंगे. यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर सपोज मुझे सिंबल ऐड करना है, then also I can able to add the this suppose diameter symbol I want here. So from this symbol, if I select here the diameter, then it will appear as a phi, its symbol. Okay, now I don't want this. So initially after getting this command, entering this command, ये select करने के बाद पहला टास्क हमें क्या करना है, सीधा लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर, यहाँ से हमें जो ऑप्शन है टेक्स्ट हाइट का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट इट एट 4 mm. तो ये सिलेक्ट करके 4 टाइप करके हमें क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है. सी द वॉट एवर चेंजेस अपीयर ऑन द डिस्प्लेड स्क्रीन. तो यहाँ पे हमें 4 mm का टेक्स्ट हाइट दिखेगा. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी सपोज मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू लिखना है, FV लिखना है, तो मैं यहाँ पे FV टाइप करूंगी. जूम आउट करती हूँ मैं थोड़ा. ठीक है, अभी हमें दिख रहा है कि ये हमने जो ड्राइंग एरिया सेलेक्ट किया है उससे बहुत बड़ा टेक्स्ट आया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. when we are closing this text editor by selecting the right side topmost option, that is close text editor, यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो ये टेक्स्ट कमांड टर्मिनेट हो जाती है, और जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है देखो दैट अपीयर्स ओवर हियर. यहाँ पे आया. नाउ अभी मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, कहाँ पे चाहिए, इस व्यू के नीचे चाहिए. नाउ ऑल्सो आई डोंट वांट दिस डायमेंशन लाइन. तो ये मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और डिलीट किया, but that is important and necessary. So I'm placing that dimension in top view because it's the same dimension and matching its properties. Okay.
यहाँ पे आया तो भी चलेगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, तो ये टेक्स्ट तो इधर आया है। Select that, zoom that, click on once on that and simply move by pressing any point on that. क्या करना है, उसी में फिर से करके दिखाती हूँ। सिलेक्ट करना है उसको, टेक्स्ट को, फिर उसके ऊपर कर्सर का पॉइंट लेकर जो हम क्लिक करते हैं माउस, वो बटन प्रेस करके रखना है, और जहां पे हमें उस टेक्स्ट को रखना है लाकर, वहां पे कर्सर मूव करके फिर उस बटन को छोड़ना है, ठीक है। इन दिस वे व्हाट वी हैव did here, we activated the move command, and this is the shortcut of the move command. Okay, abhi within 2 minutes I'm just going to stopping after finishing this command. Okay, तो अभी मुझे लेबल करना है टॉप व्यू एंड साइड व्यू को भी। तो ये साइड व्यू राइट साइड में है, मतलब ये कौन सा व्यू है ऑब्जेक्ट का, LHS व्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी कमांड देखेंगे मॉडिफाई टूल बार का, सीधा ऑप्शन कॉपी, सेलेक्ट by clicking on it, then select the object। तो मुझे क्या कॉपी करना है, तो टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट मल्टीपल टाइम चाहिए, ठीक है। तो उस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक वंस, ओके। अभी फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, ओके, बाय डिफॉल्ट मेरा पिक हुआ, फिर से मैं दिखाती हूँ, ओके। तो अभी ये प्लेस हुआ, कॉपी हुआ है, तो यहाँ पे हमें ट्वाइस दिख रहा है, तो मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। मीन्स अंडू किया मैंने कॉपी कमांड को, सी द कॉपी कमांड हमने सिलेक्ट किया, हमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जो हमें कॉपी करना है, वो ये टेक्स्ट है, उस पर क्लिक किया, एंटर की प्रेस किया एक बार, सीधा कमांड प्रॉम्प्ट एरिया स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो इस टेक्स्ट का बेस पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है, या उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। तो मुझे इस टेक्स्ट के मिडल पर का ही पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्सर से माउस के थ्रू लेफ्ट साइड क्लिक किया, ठीक है। अभी हम उसको घुमाएंगे, जहां पे हमें प्लेस करना है वहां पे घुमाएंगे। सी मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ किया, सो दैट आई कैन मूव दिस वन, ओके, विद द appropriate place। मैंने एनोटेशन ऑफ किया, ओके। टर्मिनेट हुआ कमांड फिर से लेना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे माउस को या स्क्रीन को, शायद जूम नहीं हो रहा है, so I'm just activating the command by typing it and selecting the entity। ये मैंने जूम किया। Now copy command, select the object, right click once and click on the object, place where we want to place it, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, right, and press escape key to terminate the command, copy command। अभी हमें इसमें एडिट करना है, ये हमारा फ्रंट व्यू नहीं है, so simply double click on it, type LHSV, left hand side view, and simply click in the blank screen to
terminate this command or exit from this command like this instead of closing this text editor window. Okay. Now similarly, double click on this top view. You can write complete word also and simply click outside this text editor window. ये वाला जो विंडो अपीयर हुआ है जहां पे हम अभी टाइप कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एडिटर विंडो। उसके बाहर हमें क्लिक करना है। अब ये एग्जैक्टली मिडल पे उसको प्लेस करेंगे व्यू के नीचे। ठीक है। नाउ इन दिस वे आई एम स्टॉपिंग हियर